इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्जाम्पल हमारे जो सल्फोनामाइड से रिलेटेड है। तो सबसे पहले है सल्फामिथॉक्साजोल, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइमिथोप्रिम भी इसका अनदर नेम है। ठीक है, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C24H29N7O6S। एन एंटीबायोटिक commonly used to treat urinary tract infections, ear infections, and pneumonia. It is a synthetic combination of two antibacterial agents, trimethoprim and sulfomethoxazole. ठीक है, so this synergetics combination, also known as the co-trimethoxazole, inhibit two sequential steps in the bacterial metabolism of folic acid. फिर है सल्फाडाइजीन। It is used in the combination with other drugs for the treatment of bacterial infection. And next है हमारे पास सल्फोफ्यूराजोल, और इसको क्या बोलते हैं, सल्फीजोल। And older sulfonamide used to treat various bacterial infection including respiratory and urinary treatment in infection, same as the sulfomethoxazole. And it is a sulfonamide antibacterial with an dimethyl isozole substituent. It possesses antibiotic activity against a wide range of gram-negative and positive organisms. So this is the diagram of sulfafurazole, and its molecular formula is C13H15N3O4S. Acetyl sulfafurazole, another older sulfonamide used to treat respiratory and urinary tract infection. So इसके स्ट्रक्चर में भी सेम स्ट्रक्चर आएगा जो हमने अभी प्रीवियस देखा है। एंड नेक्स्ट है हमारे पास सल्फा guanidine, and it is an antibiotic used to treat bacterial infection in the intestines such as travelers, diarrhea, and dysentery. It is a sulfonamide incorporating a guanidine, mostly used to block the synthesis of folic acid, mostly used in veterinary medicine. It has a role as an anti-infective agent. सो ये हमारे पास एंटी इन्फेक्टिव एजेंट की तरह भी काम करता है। नेक्स्ट है हमारे पास डेप्सोन। तो अ सल्फोन एंटीबायोटिक यूज टू ट्रीट वेरियस स्किन कंडीशन लाइक लेप्रोसी और डर्मेटिटिस। ठीक है, एंड इट इज़ ऑल्सो यूज अ सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट फॉर सर्टेन टाइप्स ऑफ न्यूमोनिया, एंड दिस इज इट्स स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। एंड इट इज़ active against a wide range of bacteria, but is commonly employed for its action against Mycobacterium leprae, being used as part of multi-drug regimens in the treatment of all forms of leprosy. It has a role as an antimicrobial, a leprostatic drug, and anti-infective agent, and an anti-inflammatory drug. It is a sulfone and substituted aniline. It is functionally related to a diphenyl sulfone. Its mechanism of action is probably similar to that of the sulfonamide, which involve inhibition of folic acid. राइट, एंटी इन्फेक्टिव ड्रग्स क्या होती है और उसका जनरल मोड ऑफ एक्शन क्या है। द लोकल एंटी इन्फेक्टिव ड्रग्स आर medication used to treat infections that are localized to a specific area of the body, such as the skin, eyes, ears, or mucous membrane. These drugs work by directly targeting and eliminating the infectious agents such as bacteria, viruses, or fungi at the site of infection. The general mode of action of local anti-infective drugs varies depending on the specific agent being used. Here are the some examples. एंटीबायोटिक्स, जिसके ऊपर हमने अच्छे से डिस्कशन कर लिया हो गया। फिर हो गया हमारे पास एंटीवायरल्स। दे कैन इनहिबिट वायरल एंजाइम, प्रिवेंट द वायरस फ्रॉम एंटरिंग होस्ट सेल्स और एक्टिवेट द इम्यून सिस्टम टू फाइट ऑफ द वायरस। ठीक है, फिर हमारे पास एंटी फंगल्स। दीज ड्रग्स आर यूज टू ट्रीट लोकलाइज्ड फंगल इन्फेक्शन सच एज दोज अफेक्टिंग द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन. They work by disrupting the fungal cell membrane, inhibiting fungal enzyme activity, or interfering with DNA replication. Fourth one is antiseptics. Antiseptics are used to prevent the growth and spread of microorganism to the skin, on the skin, mucous membrane, or wounds. They work by either killing or inhibiting the growth of bacteria, viruses, or fungi. Example, hydrogen peroxide used as an antiseptic. बेसिकली H2O2 हमारे ईयर्स में
साफ करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। फिर आता है आयोडीन बेस्ड सॉल्यूशन एंड अल्कोहल बेस्ड प्रोडक्ट्स। तो सल्फोनामाइड के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया है। एक है हमारे पास टॉपिक फ्यूराजोलिडोन। फ्यूराजोलिडोन का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से होता है और इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है C8H7N3O5। ठीक है, एंड इट इज़ एन एंटीबायोटिक फॉर्म ऑफ नाइट्रोफ्यूरन क्लास. इट इज़ यूज टू ट्रीट सर्टेन बैक्टीरियल एंड प्रोटोजोनल इन्फेक्शंस सच एज द garrodiasis and diarrhea caused by enterotoxigenic E. coli. It is a nitrofuran antimicrobial agent. It is also active in treating typhoid fever, cholera and salmonella infections. This is the very important ciprofloxacin, जो कि हमारे बहुत पहले यूज़ की जाती थी एज अ एंटीबायोटिक. आपने देखा होगा कि 4-5 साल पहले सिप्रोफ्लॉक्सिन नाम से एक मेडिसिन आती थी एंटीबायोटिक, जो कि बहुत ही ज़्यादा चलती थी. और आजकल हमारे पास आती है एमॉक्सिलिन. ठीक है, तो सिप्रोफ्लॉक्सिन वन ऑफ द माय फेवरेट मेडिसिन विच ट्रीट द बैक्टीरिया. ठीक है, तो इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो C17H18FN3O3 है एंड दिस इज बिलोंग टू द फ्लोरोक्विनोलोन क्लास ऑफ एंटीबायोटिक. It is effective against a wide range of bacterial infections, including urinary tract infections हो गई, respiratory हमारे पास जो tract infections हो जाते हैं, and skin and soft tissue infections. It is a quinolone, that is quinoline for 1 hydrogen 1 bearing cyclopropyl carboxylic acid fluoro and piperazine 1 ethyl substituent at position 1, 3, 6 and 7 respectively. It has a role as an anti-infective agent. So here is the diagram of ciprofloxacin. It is a synthetic broad spectrum fluoroquinolone antibiotic. Next है हमारे पास norfloxacin. ठीक है, तो norfloxacin is another fluoroquinolone antibiotic used to treat various bacterial infections, primarily urinary tract infections. तो ये भी हमारे पास सिप्रोफ्लॉक्सिन की तरह ही एक फ्लोरोक्विनोल एंटीबायोटिक है जो ट्रीट करते हैं हमारे पास हेल्प करने में बैक्टीरिया से जो हमारे पास इन्फेक्शन आ जाते हैं. ठीक है, एंड they are caused by the susceptible organism. So this is the diagram of norfloxacin and here is the molecular formula of this, and it is a quinolinamole carboxylic acid with a broad spectrum antibacterial activity against most gram positive and negative bacteria. Right, it is bactericidal and its mode of action depend on blocking the bacterial DNA replication by binding itself to an enzyme called DNA gyrase. It is the first generation fluoroquinone. तो हमारे पास सिप्रोफ्लॉक्सिन के बाद फर्स्ट जनरेशन नॉरफ्लॉक्सिन ही है जो हमारे पास अस्तित्व में आई है. तो दैट इज टाइपिकली यूज टू ट्रीट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस एंड प्रोस्टेटिस. ठीक है, फिर आता है क्लोरोक्विन, ऑल्सो एन एंटी malarial drug. ठीक है, that is also used as an immunosuppressant in the treatment of autoimmune diseases like rheumatoids. ठीक है, arthritis हो गए, ल्यूम्स हो गए. It work by interfering with the growth and replication of parasites, and this is the diagram of chloroquine and molecular formula is C18H26Cl3. It is an quinolone derivative first developed in 1940s for the treatment of malaria. It also possesses anti-inflammatory and potential chemosensitization and radiosensitization activity. लास्ट जो हमारे पास है वो है primaquine. Molecular formula C15H21N3O3 and this is the diagram of this. It is also an antibacterial medication that is primarily used to prevent relapse of malaria caused by Plasmodium vivax. Plasmodium vivax से हमारे पास क्या होता है, मलेरिया कॉज होता है. ठीक है, Primaquine work by killing the dormant forms of the malaria parasite in the liver. It is an unsubstituted diamine that is pentane 1,4-diamine substituted by 6-methoxyquinoline 8-aryl group at N4th position. It is a drug used in the treatment of malaria and pneumonia. It has a role as an anti-malarial.
सो दिस इज़ ऑल अबाउट एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो हमने ये यूनिट अच्छे से कवर कर लिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी चीज़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।